आपके कलेक्टर साहब को कानून से कोई वास्ता नहीं है क्या? है? और your lordship, एक रुक जाइए yes, प्लीज, बताइए थोड़ा सा। किताब पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, कानून पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? उन्होंने ऊपर लिख दिया कि 3 दिवस के भीतर कलेक्टर के ऊपर तो कॉस्ट लगेगी इस केस में। आपको कुछ कहना हो तो बता दीजिएगा। आई वांट टू हियर यू ऑन कॉस्ट। It is directed that collector shall pay cost of rupees 25,000 to the petitioner for his illegal orders. But collector did nothing of this sort and acted in a arbitrary manner, almost like a Tuglak of modern age. The acts of the collector remind us that historical Tuglak is still alive and kicking. सुनाइए। Lordships, first I will take you through the law which is pertaining to the acquisition. जी, This will help us in pointing out as to what are the illegalities which ये तो happen. वो केस है ना जिसमें कि सोसाइटी ने No, अनियमितता की। that is different. That is at item number 105. This is different. This is related to acquisition of the warehouse. एक्विजिशन ऑफ वेयर हाउस। Warehouse. ओके, चलिए कहाँ पढ़ेंगे प्रोविजन इसका अपन? सर ये MP लॉज मैनुअल का 4th एडिशन है, वॉल्यूम नंबर 2. दीजिएगा। रिप्रोड्यूस भी किया ना। पेज नंबर, Your lordship, ये 4th एडिशन है, 2nd एडिशन है आपके पास में? Your lordship 4th edition. हाँ, वॉल्यूम नंबर? वॉल्यूम नंबर Your lordship 2. 2 है आपको, दीजिए ना। पेज नंबर? Your lordship's page number is 99. Your lordship's 993. 993 103 है ना। Accommodation Requisition Act 1948. Accommodation Requisition Act 1948. Yes, yes. Now, your lordships, section 3, your lordships, it deals with the power of requisition. जी, And it provides that, your lordships, I read clause 1, your lordship. जी. It says, if in the opinion of the state government, it is necessary or expedient to requisition any accommodation for a public purpose, it shall call upon the owner and occupier of such accommodation by notice in writing to show, specifying therein the purpose of the requisition, to show cause within 15 days, your lordships, this has to be noted, within 15 days of the date of the service of such notice on each of them, why the accommodation should not be requisitioned. जी, So, your lordships, the purpose has to be specified and 15 days show cause notice has to be given. yes, yes. Now, your lordships may come to the clause 2. If after considering the cause, if any shown by the owner and the occupier of the accommodation, the state government is satisfied that it is necessary or expedient so to do, it may by order in writing requisition the accommodation and make such further orders as appear it to be necessary or expedient in connection with the requisitioning. जी, So, your lordships, if after reply, your lordships, they can go for the requisition. जी. And clause number 3, your lordships, it says that where the state government has requisitioned any accommodation in accordance with the foregoing provisions, it may use or deal with it in such manner as may appear it to be expedient until the accommodation is released from acquisition. Now, your lordships may come to the section 3A. 3A, yes, It is on the page number 996. yes. It says section 3A, power to take possession of requisition accommodation. Where any accommodation has been requisitioned under section 3, the state government may by notice in writing order the owner as well as the occupier of the accommodation to surrender or deliver possession thereof to such officer of the state government of the state government as may be specified in the order within 30 days of the service of the notice. Yeah. And thereafter comes section 4, your lordships. It provides for the principle and method of determining amount for requisitioning of amount. Yes. As to what will be the compensation. जी, Now, clause 1 says of section 4, where any accommodation is requisitioned under this act, there shall be paid an amount determined in the manner and in accordance with the principle herein set out, that is to say, where having regard to the provisions of subsection 2, of so far as they are applicable, the amount can be fixed by agreement. Lordships, after acquisition, there has to be an agreement Yes. with regard to the amount between the requisitioning authority and the owner. It shall be paid in accordance with such agreement. Now, point number 2, clause B, your lordship, subclause B, where no such agreement can be reached, the state government shall appoint as arbitrator
the district judge, where no such agreement is there, the district judge or the additional district judge or any civil judge having jurisdiction over the area in which the accommodation is situated. Right. Your lordships, there are the further your lordships further provisions of there. Your lordships may kindly come to the clause 2, your lordships, which is there on page number 997. Right. Now, what will be the amount? Amount will consist of what things, your lordships? The amount will payable for the requisitioning of any accommodation shall consist of a recurring payment in respect of the period of requisition of a sum equal to the rent which would have been payable for the use and occupation of the accommodation if it had been taken on lease for that period. Clause B. Such sums or sums, if any, as may be found necessary to compensate the owners for all or any of the matters, namely pecuniary loss due to requisitioning, expenses on account of vacating the requisition premises, expenses on account of reoccupying the premises upon release from requisition, damages other than normal wear and tear caused to the accommodation during the period of requisition, including the expenses that have to be incurred or for restoring the accommodation to the condition in which it was at the time of requisition. So, lordships, this is the basic structure with regard. Now, what they have done, your lordship, kindly come to the impugned order, your lordships, annexure P8, page number 61. Yes. Now, this is the notice, your lordships, which was served to me with regard to the requisition. Yes. Page number 61, your lordships, Yes. of the petition. Yes. This is the notice which has been served with regard to the requisition. This notice is dated 9/6/2023. Yes. Your lordships, I will read, your lordships. This notice is pertaining to the Vipadan verse, your lordships, that is procurement year 22 to 2023, and it is related to paddy. So, your lordship, the procurement of the paddy, it happens in the December or January, and this notice is of 9/6/2023. Yes. Your lordships, I will read this notice. एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि विपणन शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीदी की जानी है, जिसके भंडारण उपरांत शासन की विभिन्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजनाकृत वितरण किया जाएगा। विपणन वर्ष 2022-23 में उपार्जन हेतु जिले के अनुमानित लक्ष्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत वार्षिक आवश्यकता अनुसार शासकीय भंडारण क्षमता उपलब्ध नहीं होने के कारण उपार्जित धान को सुरक्षित कवर्ड गोदामों में भंडारित किया जाना अति आवश्यक है, जिससे स्कंद की गुणवत्ता बनी रहे। नोटिस 3 दिन के भीतर मुद्दे की बात पर आई है ना? यस सर। 15 दिन की जब स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट हो तो 3 दिन के अंदर कैसे? लॉर्डशिप्स एंड अदर व्हिच इज ठीक है, समझ गए। एंड योर लॉर्डशिप्स, वन मोर इलीगैलिटी इज देयर, दे आर मेंशनिंग आपका गोदाम 25 रुपीस में ले लिया जाएगा। Now this amount has to be determined in accordance with section 4. You cannot come and arbitrarily push any amount. I have understood. And your lordships, on the same day, they passed an order which is there in page number 62. Your lordships. So your lordships, this is completely illegal in nature. Why this was done, your lordships? 9/6 को नोटिस दे रहे हैं 3 दिन का, और 9/6 को अधिग्रहण कर लिया आपके कलेक्टर साहब को। कानून से कोई वास्ता नहीं है क्या? है? और your lordships, एक रुक जाइए प्लीज, बताइए थोड़ा सा। किताब पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, कानून पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, तो कैसे जस्टिफाई करेंगे? थोड़ा बताइएगा तो। सर, so far as this notice is concerned, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। There should have been 3 days notice. नहीं, 15 दिन का नोटिस, एक्ट से 15 डेज नोटिस। 3 दिन का नोटिस देके 3 दिन का भी वेट करने की जहमत नहीं उठाई। इसमें आप कंप्लीट कर ले। मैंने डॉक्यूमेंट लगाए कि 1-2 महीना पहले से इनको बताया था। नहीं बताया, कहाँ से बताया था? मौखिक जाके कलेक्टर साहब गए थे इनसे मिलने के लिए। डॉक्यूमेंट्स हैं, वो दिखाइए ना, डॉक्यूमेंट दिखाइए कहाँ है? वेयर इज द नोटिस एंड अंडर व्हिच प्रोविजन ऑफ लॉ 2 महीने पहले आपने बताया था? हाँ बताइए। What happened, my lord? The reason for this, my lord, may see that the godowns of private. I'm not concerned with that. मुद्दे मुझे वो दिखाइए। अगर आप एग्जैक्ट उस पॉइंट पे आ रहे तो then order has to go. Order has to go, yes. Then it has to go. But they with a liberty to proceed in accordance with section 4. And they will pay the penalty. उसमें नहीं, उसमें आप एक देख लें, अगर आपको एप्रिशिएट रेंट तो देंगे ना अभी तक का जो एक्विजिशन का है। कोई किया ही नहीं। सर, उसमें क्या हुआ,
आप देखिए there is a PIL that was filed कि we are short of godowns. Now in 27/12/2022 what happens मतलब when we take the godown under joint venture scheme, ये कहते हैं साहब उसमें ड्राइएज ज्यादा हो जाता तो they were not interested, तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी डिसीजन लेते हुए उसको 45 रुपये ज्यादा बढ़ा दिया, फिर भी कोई नहीं आए. तो then a notice policy notice was issued saying that notice circular was issued कि आप अगर joint venture में नहीं आते, we tried our best कि आप आ जाए, nobody is coming, तो फिर रिक्विजिशन जो 1940 एक्ट का किया आपको एक्विजिशन के हक को आपको चैलेंज नहीं कर रहे सर. उसके बाद फिर एक पूरे जितने बालाघाट वाले थे सबको नोटिस गया, सबको गया. किस का नोटिस गया? यही गया कि साहब वेट माय लॉर्ड में कम टू एनेक्सर R1 फर्स्ट में R1 यस R31 यू आर रेफरिंग टू R31. मैं सर R1 रेफर कर रहा हूँ, मेरा जो जवाब है सर. आप ही का जवाब R31 है ना सर R3 आई एम सॉरी गलती से R1 मार्क के पेज नंबर 9 पे आ जाइए. हाँ पढ़िए. दिस वाज द फर्स्ट सर्कुलर दैट वाज इशूड टू ऑल द कलेक्टर्स 2 दिसंबर 2000. खरीफ उपार्जन सचिन सच के भंडारण व्यवस्था हेतु आवश्यकता अनुसार गोदाम का अधिग्रहण. सर ये पूरा डिटेल आपको मैं सीधे यहाँ से ले जाऊंगा. एक सेकंड रुक जाइएगा, पूरा पढ़ देता हूँ सर. आप आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत जल्दी नहीं है सर. यस हाँ. इसका विषय था खरीफ उपार्जन सचिन सच की भंडारण हेतु आवश्यकता अनुसार गोदाम का अधिग्रहण. खाद्य विभाग द्वारा खरीफ सीजन सचिन सच के लिए उपार्जन हेतु MPWLC राज्य का भंडारण एजेंसी है. इसको पढ़ के क्या बताना चाह रहे हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट देयर वाज ए प्रपोजल कि हम आपको बड़े आपका प्रपोजल होगा, फिर उसके बाद कहाँ है इनको? फिर आप आइए R2 में R2 आइए जी. दिस इज डेटेड 27/12/2022. जब कोई ज्वाइंट वेंचर में हमारे पास नहीं आए तो फिर हमने इसी जो R1 का हवाला देती हूँ, R31 का हवाला देते हुए आप देखिए संदर्भ में वही है 2/12/2022 का उपरोक्त. ये देखिए ऊपर समस्त निजी गोदाम समस्त से लिखने से नहीं होता, आप भी समझते हैं. मैं आपको 10 जजमेंट दे दूंगा इसी पॉइंट पे, अगर आप एलोबरेट डिसीजन चाहते हैं. समस्त नहीं होता. आपने एंडोर्समेंट में कहाँ एक सर मैंने एफिडेविट में कहा है कि ये वहाँ के में कहाँ एक सर मैंने एफिडेविट में कहा है कि ये वहाँ के एक्टिव, इनको भी भेजा था. ही हैज नॉट डिनाइड. लाई पावती दे दीजिए. आई हैव डिनाइड इट. एक सेकंड आप देन इन दैट केस मान लो इट हैज टू. फिर आप आगे बहस का कोई मतलब है क्योंकि आपने वो लीगल बात सही है. आप देखिए इनको, लेकिन सो फार एज रिक्विजिशन इज कंसर्न्ड शायद उसमें कोई इंटरिम ऑर्डर कोई उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं रिक्विजिशन में. नहीं योर लॉर्डशिप्स, मैं आपको एक चीज पॉइंट आउट तो हुआ ही नहीं ना. 1 minute I will take your lordships. Your lordships may come to the rent bill, your lordships, which is there in annexure P7 of my petition, which is there on page number 60. Yes. अब इसमें सर ये लिखा रहता कि कब से इन्होंने गोदाम अधिग्रहण किया है. इसमें मैं पढ़ूं सर, श्रीमती ज्ञानेश्वरी बनोट के गोदाम पर फुसेरी बालाघाट में स्थित जो भंडार गृह निगम शाखा बालाघाट द्वारा निगम की स्वीकृति किराया दर ₹25 प्रति मेट्रिक टन के अनुसार दिनांक 5/12 your lordships, this date has to be noted. मतलब इसके पहले इनको एक्विजिशन करना चाहिए था. और मासिक किराया 98,000 सो एंड सो. भंडार निगम बालाघाट की गोदाम पंजी के अनुसार गोदाम क्रमांक सो एंड सो में 3928 मेट्रिक टन है. उक्त गोदाम में प्रारंभिक स्कंद की मात्रा सो एंड सो, माह की अंतिम स्कंद मात्रा 3219 टन है. उक्त गोदाम का किराया योर लॉर्डशिप्स 5/12 से 28/2 तक का ये लॉर्डशिप्स 25 रुपए के हिसाब से दे रहे हैं. योर लॉर्डशिप्स आप अगर आप 25 रुपए के हिसाब से इनका अधिग्रहण रेट, so your lordships, this has to be, your lordships, acquisition has to be before 5/12 your lordships. मेरा गोदाम से actually क्या हुआ था, they floated in contract. How we are concerned with this? ये तो when was your godown requisitioned? After giving this notice 9/6/2023. Before that only your lordships, if I am given the rent of ₹25, अगर रेंट मेरे आपने ये तो इशू ही नहीं है. उठाए इसमें अगर ये डिस्प्यूट करते हैं देन सेक्शन 4 उसमें किराया सर लिखा हुआ ऊपर. he dispute the quantum, then section 4 comes into play, then the district he can refer the matter to the arbitrator. Yes. Now let me come to section 4. I have gone through section 4. Yes, देखिए इस वक्त या तो आप देखिए, you cannot take contradictory pleas. Your case is that 9/6 को नोटिस दिया, 3 दिन का नोटिस दिया, लॉ सेज 15 days नोटिस, एंड 9/6 को ही उन्होंने दूसरा आदेश पारित कर दिया कि रिक्विजिशन कर लिया. यहाँ तक समझ में आता है. दूसरा आपने कहा कि इन्होंने यूनिलेटरली 25 रुपए कर लिया, जबकि एग्रीमेंट इसके हिसाब से they were required to enter into an agreement, and if you were not agreeing to the rent, they should have referred the matter to the arbitrator in terms of first agreement has to. ठीक है. दिसंबर वगैरह की बात में मैं नहीं जाऊंगा. अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो मैं आपको जो है कहीं और भेज. सबसेक्शन 2 भी है सर. सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 2 का डिटेल इसके बियॉन्ड आई विल नॉट ट्रैवल. सबसेक्शन 2 जो आप कह रहे हैं, इट कवर्स द
पिक्यूनरी लॉस ऑल्सो, आप सबसेक्शन देख 4 लिया। का सबसेक्शन 2 देखेंगे सर। आपने जो क्वेश्चन चाहिए वो 9/6 की चाहिए। मैंने अमेंडमेंट भी करी है पिटीशन हाँ, की। क्या अमेंडमेंट कर दिया? अमेंडमेंट करके सर मैंने इनके जो सर्कुलर्स हैं, जो ये 25 रुपए सर ये अपनी मन से लिख रहे हैं। एक सेकंड सुनिए, अगर आपका ये ऑलरेडी एक्यूजिशन में हो था चुका। तो फिर 9/6 के नोटिस की तो कोई सेंक्टिटी ही नहीं है। नहीं सर, योर लॉर्डशिप, इन्होंने हम वही मेरे सब पूरे फैक्ट्स आ नहीं पा रहे हैं। मैं ये चीज बता रहा हूँ, जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में चेंज किया तब हमने कहा कि हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं करेंगे। आई हैव रिटन दिस लेटर। उस लेटर के परसुएंस में इन्होंने ये मतलब ये चीज नहीं बताई कि आपका गोडाउन रिक्विजिशन कर रहे हैं, और इन्होंने सामान रखना चालू कर दिया। दे हैव नॉट कम्युनिकेटेड एंड योर लॉर्डशिप 25। सर आपका जजमेंट है डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, देन ही हैज टू फाइल अ नहीं, सिविल सूट। सिविल सूट इज बार्ड अंडर सिविल सूट नहीं, इसमें बार्ड अगर ये Any question नहीं, related साथ to this देखो, is अगर ये barred. एक्ट अब 1940 आप ऑर्डर सुनिए। 1940 एक्ट के एक का पिटीशन इज फाइल्ड। मेलोड, एक चीज मैं बस बता दूं आपको, जी। आप ऑलरेडी देख चुके हैं। आप देखिए सबसेक्शन सेक्शन 4 का सबसेक्शन 2 जो है वो बड़ा, ऑर्डर सुनिए। उसमें अगर एग्रीमेंट भी नहीं है Please सर wait. सर This petition is filed seeking quashing of the orders dated Your lordships, I have also challenged R1 Please and R2. wait. Yes. Annexure P7, comma, Annexure P8, which is the show cause notice dated 9/6/23, which is the issued by the collector Balaghat, and another order of the same date bearing number. आपके कलेक्टर साहब एक ही उससे कैसे दो ऑर्डर पास कर लेते हैं एक ही नंबर से? और समझाइएगा तो। पढ़िए, पेज 61 पर आइए। पेज 61 पे डिस्पैच नंबर पड़ा है, क्रमांक 685 बटे खाद्य -3 बटे 23-24। ठीक है, और यही इसके द्वारा इन्होंने शो कॉज नोटिस दिया है 3 दिन के भीतर, और इसी नंबर से इन्होंने दूसरा आदेश पारित कर दिया 685 बटे खाद्य 3 223-24। इसमें उन्होंने कहा कि उक्त गोदाम का कब्जा लेकर सहायक प्रबंधक इतने इतने को सौंपे। उसी तारीख को इन्होंने कब्जा लेने के लिए कह दिया, और उन्होंने ऊपर लिख दिया कि 3 दिवस के भीतर। कलेक्टर के ऊपर तो कॉस्ट लगेगी इस केस में, आपको कुछ कहना हो तो बता दीजिएगा। आई वॉन्ट टू हियर यू ऑन कॉस्ट। देयर इज नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। ही इशूज अ नोटिस ऑन 9/6, साइंस दैट नोटिस, देन ही सेज दैट नोटिस को 3 दिन के अंदर इन्होंने जवाब नहीं दिया, नंबर भी एंड आई एम गोइंग टू इम्पोज अ हैवी कॉस्ट ऑन यू। और नंबर भी डिस्पैच का दोनों का सेम है। दिस शोज मैनिपुलेशन। लिखिएगा एट द टाइम ऑफ हियरिंग, सॉरी इसमें भी कहाँ लिखा रहे थे, another order dated 9/6/2023, which is ironically bearing the same number 685/Khad-3/2023-24, mentioning therein that since no reply has been filed to the show cause notice, therefore directed the concerned sub-divisional magistrate to take possession of the godown and hand it over to the branch manager of Madhya Pradesh Warehousing and Logistics Corporation, Balaghat. Full stop. It is pointed out that the petitioner is also assailing orders dated 2/12/2022 and 25/8/2022. So also 7/6/23, annexure R1, R2 and R4 in this writ petition. Next paragraph. Petitioner's case is that in terms of the provisions contained in accommodation within bracket requisition bracket close Act 1948, comma, section 3 provides for powers of requisition. Full stop. Next paragraph. Section 3 within bracket 1 of the Act of 1948 provides that in notice in writing specifying therein the purpose of the requisition to show cause with comma within 15 days of the date of the service of such notice shall be given that why the accommodation should not be requisitioned. Full stop. First shortcoming is that collector
without going through the provisions contained in the Act of 1948, issued notice on 9/6/2023, giving only 3 days time, full stop. Thus, it is evident that collector was not acting bona fidely and was violating the statutory provisions contained in the Act of 1948, full stop. It is pointed out that on the same date, that is 9/6/23, collector issued an order saying that despite notice calling for reply within 3 days, no written reply is filed, and therefore go down of the petitioner is requisitioned, full stop. This order is illegal on face of record and reflects non-application of mind in as much as collector has not mentioned the date of the notice which expired on 9/6/23, full stop. Thus, it is evident that collector, without application of mind, passed second order, full stop. As far as order annexure P7 is concerned, comma, it is full stop. P7 nahi. It is also pointed out, reading annexure P8, that collector decided the rate to be paid to the godown owner on his own, whereas provisions contained in section 4 within bracket 1 provides that deals with principle, whereas section 4 of the Act of 1948 deals with principles and method of determining amount for requisitioning of accommodation, full stop. Section 4 within bracket 1 another bracket small a provides that either amount can be fixed by agreement between the requisitioning authority and the owner, or clause B provides that if no such agreement can be reached, comma, the state government shall appoint as arbitrator the district judge or the additional district judge or any civil judge having jurisdiction over the area in which the accommodation is situated, full stop. It is thus pointed out that either there should have been any agreement for rent, or the matter should have been referred to the concerned member of the district judiciary in terms of clause B under section 4 within bracket 1, full stop. Reading this, it is pointed out, next para, it is pointed out that earlier also petitioner's godown was requisitioned and a bill was sent by the branch manager of Madhya Pradesh Warehousing and Logistic Corporation as contained in annexure P7, unilaterally fixing the rent at 25 rupees per metric ton, full stop. When this amount was not accepted, when the petitioner had given his unwillingness, then godown was vacated. No, your lordships, when I have given unwillingness, thereafter they told that their agreement, your lordships, with the PMS agency, that will remain there. And I have believed in that undertaking and allowed the food grains to be kept in the godown, your lordship. Full stop. क्या लिखा? Unwillingness, person from whom the property was being requisitioned, or if there was no agreement possible, then what matter was required to be referred to an arbitrator. But collector did nothing of this sort and acted in a arbitrary manner, almost like a Tuglak of modern age. Full stop. The acts of the collector remind us that historical Tuglak is still alive and kicking. Full stop. The impugned orders therefore cannot be sustained in the eyes of law. They are hereby quashed. Full stop. Since collector has not applied himself to the fact situation and has caused
and has passed illegal orders, comma, as far as cost part is concerned, it is directed that collector shall pay cost of rupees 25,000 to the petitioner for his illegal orders, full stop, which will be the cost towards the litigation. As far as issue of the rent is concerned, parties will be free to refer the matter to the arbitrator in terms of clause B of section 4 within bracket 1, which will decide the actual quantum of rent payable in favor of the petitioner. In above terms, petition is allowed and disposed of.